lot coming in. The All India Muslim Personal Board has filed an affidavit in the Supreme Court. In that, they have said, and we're going to read this out here, that there's no prohibition on Muslim women offering namaz in mosques, but the intermingling between genders as they're standing in lines to enter the mosque, that is prohibited. Now, we'll bring you more details in just a second, but this affidavit was in response to a petition filed by a Pune-based activist, Advocate Farha Anwar Hussain Sheikh, in which she was seeking a direction that the alleged practices of prohibition of entry of Muslim women into mosques in India are illegal and unconstitutional. Now, these are the details we have with us right now. This was via a statement that was released on Wednesday. My colleague Pranshu Mishra is with us. Let's go over to him very quickly. Pranshu, over to you. Yes, that's it, Toya. In fact, this is, I'll say it's a reiteration of the Muslim Personal Law Board stand. So, in fact, this is the second affidavit which we are talking about. The first affidavit that was filed in Supreme Court has again said that, the board has no objection to women's entry into the mosque. Only thing is that the prayers can't be offered together. So there needs to be segregation. Women need to offer prayers or namaz inside the mosque in a separate enclosure or separate place, and men need to offer in a separate enclosure or a separate place. Now that is what the argument of the Muslim Personal Law Board is, and they say that in fact, under the Islamic text, Islamic beliefs, even in Mecca, the holiest of the places, there is this provision of segregation. So even in Saudi Arabia and in the Gulf countries where the prominent mosque stands, there is this separation of women and men devotees, and therefore there is no need of allowing them to be in the same formation or in the same line. So Muslim Personal Law Board, being progressive to a certain extent, saying that there is no objection to women entering the mosque and offering namaz, but it is still not open to the idea of common offering of namaz, and they clearly believe that entry is fine, but separate enclosures or separate provisions for Muslim women devotees and men devotees, that is what they feel has been prescribed by the Islamic texts. Okay, what does this effectively mean though? The fact that an affidavit has now been filed, what are the next few steps, Pranshu? Well, see, it was basically demand for allowing Muslim women to enter the mosque. And if you go in recent history, 10 or 15 years back, there was this very strong movement of Muslim women being allowed inside the mosque. And at that point in time, there were cases reported from places like Lucknow where Muslim women have actually gone ahead to have their own mosque and offer their prayers separately. So I think in that sense, it is clearly a big step forward where the All India Muslim Personal Law Board has no reservations for women entering inside the mosque. Only thing is that, they are saying that we want them to be inside the mosque, but there should be separate enclosures. So if you see Muslim practices, even in times of nikah or in the last rites when the burials takes place, there is generally a provision where Muslim women and men are, discharging their rituals separately. So I think it is a progressive move on the part of the Muslim Personal Law Board, that okay. It's not objecting to entry of Muslim women inside the mosque, but yes, it is still insisting on separate provisions for offering namaz for both men and women. Pranshu, stay with us. If I could just ask you to stay with us. Women's rights activist Zeenat Shaukat Ali is actually with us on the phone right now. Ma'am, thank you so much for joining us here on CNN News 18. Ma'am, the AIMPLB coming forward and saying that there's no prohibition on Muslim women offering namaz in mosques, but intermingling between genders, particularly in the lines outside, is prohibited. I just want to understand from you, ma'am, experts are phrasing this as one step forward and one step backward. Do you agree? Yes, I think first, I would like to say it is a forward move, that at last, that they are saying that it is a big thing for them to even say that women can and should enter mosques. Now, as far as intermingling is concerned, intermingling takes place all over the world and in every part. When you go shopping or you want to buy something, or you go to the courts or you go to institutions, intermingling does happen. But what they're talking about, separate spaces, they can they have to try to see how they can expand and to make spaces, because by saying that the women can enter the mosque and yet say that there is no space for them to enter is not sufficient. They have to see that space is created. So that space needs to be created so that women may enter, because making a simple statement, you have to
you have to, what you say, live follow the through. talk. Right. Ma'am, can I just ask you to actually stay with us? The AIMIM spokesperson, Kalimul Hafiz, is actually with us. I want to go over to him right now to understand what his perspective is. Sir, हमारे साथ CNN News 18 पे जुड़ने के लिए धन्यवाद. Sir, AIMPLB की तरफ से ये जो प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मुसलमान लेडीज हैं, जो महिलाएं हैं, वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर जा तो सकती हैं, बट उनका आदमियों के साथ मिलना जुलना वो अभी भी उन्होंने मना किया हुआ है. सर, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? AIMIM की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जहां तक मैंने वो एफिडेविट पढ़ा है, उस एफिडेविट में उन्होंने बाकायदा कम्युनिटी से ये मांग भी की है कि अब आप जो मस्जिदें बनाएं उसमें औरतों के लिए एक अलग से स्पेस क्रिएट करें. बिल्कुल. ताकि वो लोग भी आपके साथ नमाज पढ़ सकें. बिल्कुल. जहां तक सवाल नमाज जो आप जिसको कह रहे हैं इंटरमिंगलिंग, एक्चुअली होता क्या है कि जब हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो वहाँ सफ़ें बनती है. तो सफ़ में जो एजेड लोग होते हैं वो एक जगह खड़े होते हैं, बच्चे थोड़े उनके पीछे होते हैं. इसी तरह से उन्होंने कहा है कि एक सेपरेट उसी में स्पेस लेडीज की भी बना दी है, ताकि विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वो भी नमाज पढ़े, वही सेम नमाज पढ़े. सर, बट तो सर एक सेकंड सर, अच्छा दुनिया भर में ये कई सालों से किया जा रहा है कि मस्जिदों में, दूसरे देशों में लेडीज जाके मॉस्क के अंदर जा सकती हैं, नमाज पढ़ सकती हैं. सर, आपको नहीं लगता इंडिया में ये आने के लिए काफी समय लगा? नहीं, इंडिया में भी बरसों से होता है. आप ओखला में आइए, जमात इस्लामी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे बिल्कुल 10-20 साल से औरतें नमाज पढ़ती हैं. जामा मस्जिद में चले जाइए, औरतें नमाज पढ़ती हैं. औरतें हिंदुस्तान में भी बाकायदा नमाज पढ़ती हैं. अभी द्वारका में मस्जिद बनी है, पूरा बेसमेंट गर्ल्स के, लेडीज के लिए फ्लोर है पूरा. सर, बट हाँ, बिल्कुल सर, नहीं है, उन्होंने उसको रिएटरेट किया है. सर, बिल्कुल, पर ये जो दिया है उसको दोहराया है. एक सेकंड सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो सेपरेट स्पेसेस का जो एडिशनल नोट है इसमें, सर, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, वो सेपरेट स्पेसेस का मतलब ये होता है कि जब कोई वुजू करके लेडी आती है, जेंट्स आते हैं, तो वो जाहिर बात है कि उनको अगर वो अपनी गर्ल्स के साथ, लेडीज के साथ एक साथ खड़े होंगे तो कंफर्ट होगा. इसलिए उन्होंने कहा उनका स्पेस ही अलग बनाइए आप. ऑलराइट सर, बट अभी ज़ीनत शौकत अली हमारे साथ जुड़ी हुई थी. सर, एक सेकंड, एक वुमेन्स एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई थी. उनका ये कहना था कि क्या जरूरत है, जब पूरी दुनिया में मस्जिद के बिल्कुल बाहर आदमी और औरत एक साथ खड़े रहते हैं, तो मस्जिद के अंदर इस सेपरेशन की क्या जरूरत है? सर, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, इसमें देखिए वो सेपरेशन की बात नहीं है. उनका कहना ये है कि आप जब स्पेस बनाते हैं, मैंने कहा ना, बच्चों को हम पीछे खड़ा करते हैं, जो एल्डरली लोग आगे खड़े होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग है, वो वहीं होते हैं. इसी तरह से अगर लेडीज का भी स्पेस वहीं है, उसी मस्जिद में है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो इट्स वेरी वेलकम स्टेप. इससे अच्छा इजी होता है, लेडीज के लिए भी इजी है कि वो अपनी जो नमाज है वो बिना किसी परेशानी के पढ़ेंगे, क्योंकि वो गर्ल्स में ही होते हैं सारे. दूसरा, उधर मेल पढ़ रहे हैं, इधर फीमेल पढ़ रहे हैं, बट एक साथ नमाज हो रही है, एक ही मस्जिद में नमाज हो रही है. ओके, ऑलराइट. कलीमुल हफीज